Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 28th of October. Through this video session, I'll make you understand and analyze the important news and editorial that would be relevant for the civil services examination. If you're preparing for any state PCS or any other government examination, the entire session is going to be fruitful. So watch till end of this video so that you can have a comprehensive idea about the news. And those aspirants who will be appearing for prelims examination 2024, it is very important that you practice good number of MCQ questions. There are roughly 6 months left to your examination. The prelims is scheduled for 26th of May. बाकी के 26 दिन अगर छोड़ दें, आपके पास 6 months हैं जहाँ पे आपको अच्छे MCQs की प्रैक्टिस करनी है and you have to build a strong foundation. Now, to make this possible, we at Apti Plus has brought Nishchay program. This is an all India test series program जहाँ पे आपको 4900 plus questions मिलेंगे, video discussions होंगी, demo test and free magazine for content enrichment. So it's a one-stop solutions where you'll be getting the most part of the MCQs here, right? For instant registration, आप ये QR code use कर सकते हैं and even you can reach out to our website for further details. So do check it out. And we'll proceed with the news analysis. उससे पहले मैं आपको highlights बताऊंगा. Then one by one we'll see the complete detail of the news. So starting with the first news that talks about the Prime Minister, which will lay the foundation of Amrit Vatika, the first news. Second, we'll see how the panel has actually rolled back the report on the crime bill, जहाँ पे recent जो criminal bills हैं उनमें changes लाई गई थी. Third talks about the 80% of Indian urban population have access to high-speed internet. This is a transition which Prime Minister is talking about. The second last news talks about India's greater self-reliance in terms of cyber security, hardware and software that is essentially required. ये continuation है International Mobile Congress के address को जो Prime Minister ने actually. And we'll conclude the session with editorial that talks about women can make the world better. Something very very important because women empowerment को लेकर के UPSC ने खासा जोर दिया है and they have been asking question in a regular interval. Now, coming to the detailed analysis of the news one by one. So the first news is the foundation of Amrit Vatika. Prime Minister will lay the foundation of Amrit Vatika at an event which is under Meri Mati Mera Desh. So this is, you can call it triple MD. Meri Mati Mera Desh, and this will be there at Kartavya Path in Delhi. This is also a new part of development process जहाँ पे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जब बनी है कर्तव्य पथ बनाया गया. It was earlier known as Rajpath. It is in Delhi. It is in the area is called as Lutyens Jones और न्यू दिल्ली में है ये, based इंडिया गेट के पास में. Those of you are familiar must be aware of this. Now coming to the detail of Amrit Vatika and what government is actually conceptualizing with this. So Amrit Vatika की अगर बात करें, this has been situated adjacent to the Netaji Subhash Chandra statue. This is again new which Prime Minister has actually made the statue. This is the statue which was actually recently being established there. And the grand canopy of the National War Memorial. तो बहुत ही important place है जहाँ पे National War Memorial नेताजी सुभाष चंद्र के स्टैच्यू के साथ साथ अमृत वाटिका उसी adjacent area पे बनाने की बात की गवर्नमेंट. Now this will be the newest landmark which will commemorate the 75 year of India's independence, और आप कह सकते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव which was there, right? So this is a part of the campaign which government is actually running out. Now Amrit Vatika is a memorial lawn that will have an area of 1200 square kilometer, 12,000 square kilometer, and the soil will be collected from 766 districts across the country. तो हर एक जगह से soils मंगाई गई हैं, sample soils, so that it can actually be put in and ensure that the unity for the all and diversity for all in the Amrit Vatika Park. Now, Amrit Kailash Yatris will be called. Now, the government has actually arranged over 200 Amrit Kailash Yatris that will be coming from different states across all the states and the union territories, right? So, state and union territories से ये लोग आएंगे, and they will be coming with 2-day carnival in the Kartavya Path. So, this is something very important, a landmark moment that is going to be there for the country. Now, Meri Mati Mera Desh campaign, which was actually started on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is also known as AKAM, right?
So this was launched by the central government to commemorate 75 year of India's independence and to recognize the fact that what contribution that was made by our soldiers, इवन जो ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के लोग हैं उन्होंने क्या अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है इवन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग वॉर सो दीज थिंग्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन. The initiative aims to showcase and forecast India's progress and the potential field and inspire in the youth and even the national building. बहुत सारे ऐसे schemes भी लाए गए where the skill empowerment for the youth can be forecasted and they should be actually inspired from the path where the nation building can take place. कई ऐसे important national movement हुए हैं जहाँ से youth भी inspiration ले सकती है. The initiative aims to honor and commemorate the sacrifices of martyrs. तो जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं नेशन डेवलपमेंट के उनको रिकॉग्नाइज करना एंड इवन टू एक्नॉलेज दिस टू द इंडियन यूथ. नाउ दिस इंक्लूड फ्रीडम फाइटर इज द फर्स्ट, सेकंड द डिफेंस पर्सनल, मेंबर ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दैट इज CAPF. उसके साथ साथ स्टेट पुलिस ने अपनी ड्यूटी में जो भी इंपॉर्टेंट फाइटर्स ने एक्चुअली जो जिनको शहीदी मिली है they will be actually recognized, their duties, their important role towards nation will be taken into consideration. Now moving ahead, panel hold back a report on the crime bill. Now something important because the government, the Ministry of Home Affairs, अगर बात करें MHA की, they have actually brought the bill और इस बिल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस को रिकमेंड की गई थी. उससे पहले इसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया टू स्क्रूटनाइज द बिल, राइट. So the committee has actually postponed the draft report जो 3 बिल में changes की गई. I'll tell you the detail what are these changes that has been brought in. But अभी के present context में oppositions को देखते हुए opposition has actually raised concern about this and they said that India is not adequately prepared to implement this because of the reason it has been put on abstinence. Now, what is this new crime bill? I think I have made a discussions earlier as well. और आपको basics पता होंगे कि क्या crime bills थे. So first is the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और उसके बाद भारतीय साक्ष्य संहिता which is known as evidence. So these 3 was actually introduced in the lower house or in the Lok Sabha, right? कब introduce की गई थी? This was introduced in August 11, 2023, right? Now the bill seeks to replace Indian Penal Code that is 1860. These are the colonial law. ये colonial laws हैं जो कि अभी भी act है जो कि functional है. Code of Criminal Procedures 1973 और Indians Evidence Act 1872. ये तीनों को change करके गवर्नमेंट ने ये नई bills लाई थी. Now भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता will replace the CRPC, right? And it will now have 533 section. I'm just giving you the brief. मैं आपको just background बता रहा हूँ that you can understand that what was the actual bill that was brought in. उसके बाद भारतीय न्याय संहिता which replaced the IPC that is Indian Penal Code and it will have 356 section instead of earlier 511. तो उसको reduce करके 356 की गई है. और भारतीय साक्ष्य संहिता which is known as Indian Evidence Act will now have 170 sections instead of earlier 167. So these were the major changes that were brought in. इसके detailed में जाना possible नहीं है. We are not looking into the part of law और कोई इस तरह के services के लिए, तो इतनी detail में आपको जानना जरूरी नहीं है. Basics आपको पता होना चाहिए. Now the new feature, just to give you the brief idea, some basics that you need to know, that the refuse to allow data collection shall be an offense under the section 86 of the IPC. This is the provisions which has been incorporated. The bill allowed the collection of biological data, right? And those arrested under the prevention laws will also be taken into consideration. और ये सारी data NCRB, that is National Crime Record Bureau, maintain करेगी. For data will be collected at least for 75 years. That will be taken into consideration. If you want to read more, you can take screenshot और आप accordingly इसे revise करने के लिए भी use कर सकते हैं. Now provisions क्या है organized crime में? Basically organized crime को highlight करते हुए panel ने कहा है the parliamentary standing panel. If you look at the parliamentary standing panel, they have said that they were reviewing the 3 bill to replace the existing criminal code और उन्होंने recommend किया है कि कुछ provisions में organized crime को भी tackle की गई है and the law has makes thing more stringent. So भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें, this seeks to replace Indian Penal Code that is IPC 1860 which is again a colonial act और इसे नई प्रोविजंस में डिफाइन की गई है विद द पार्ट ऑफ
क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम. अब ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, दिस मस्ट बी नोन टू यू. दिस इंक्लूड गैंग, माफिया, माफिया विच इंक्लूड द crime rings involving the gang criminality, the racketeering and syndicate organized crime will be considered as a organized crime, right? नाउ पॉइंट ऑफ कंटेंशन या फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में क्या ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से पैनल ने, अगर बात करें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, पीएससी ने एक्चुअली में से विथहोल्ड किया. सो दे डिमांड द चेंज इन द भारतीय न्याय संहिता विच विल रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट विल हैव रिप्लेसमेंट विद द criminal procedures code. Why? Because the code of conjunctions, that Hindi nomenclature which will be used, has been accepted in the draft, and the problem is there only because they don't want that. See, government has already made India with Bharat, so these things are working out. We are not concerned about this, but कुछ ऐसे जो issues already center और opposition के बीच में है, the union government और opposition के बीच में, वो आपको जाननी, basics जाननी जरूरी है. The panel report that the state will have the text because this does not have violation of Article 348. तो ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो टेक्स्ट यूज की गई है, जो फॉर्मेट यूज की गई, दैट इज इन इंग्लिश, सो देयर इज नो वायलेशन एज सच. लेट्स सी, आई मीन दिस विल बी पोस्टपोन्डेड टिल इलेक्शन. इलेक्शन से पहले इसमें कुछ भी नहीं होनी है. बट इफ एनी डेवलपमेंट कल मतलब इफ एनी डेवलपमेंट इज अकरिंग इन दिस बिल और दैट इज इमर्जिंग आउट ऑफ दिस बिल, विल डेफिनेटली मेक अ डिस्कशन टू दैट एज वेल. Now, moving ahead with other news, that is 5G success and India's aim to lead with 6G. 6G is something which is the next revolution for India. अगर 5G की बात करें, we have made a substantial progress. India ने काफ़ी progress की है. अगर बात करें 5G की, the technology which we are using with the scale we are using, it's comparatively best among all the countries. So इंडियन मोबाइल कांग्रेस को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज किया कि जो 5G टेलीकॉम रोल आउट की गई है India में specifically, that is making India more robust in terms of moving toward the 5G technology, right? Now, tech labs बनाने की बात की गवर्नमेंट ने. This was actually announced in the Union Budget 2023-24. So this announcement call जहाँ पे गवर्नमेंट ने tech labs बनाने की, this will be the 5G and 6G labs that will be developed, where 80% of the capital, अगर बात करें capital assistance की, 80% will be given the part of expenditure, 100% operational expansion for the next 4 years. Now, कौन-कौन से ऐसे institutions हैं जो इस tech labs में include होंगे? So this will include the IITs के साथ-साथ NITs और triple IITs भी इसमें involved हैं. That will be providing with the part of selections for the higher education institution with 20% of the capital expenditure that will be given to the labs. Now, with the year launch of the 5G, 4 lakh 5G base station has also been built in India. So you can see the scale, I mean, just scalability से जिस तरह से ये बढ़ रही है, ये काफ़ी हाई है और आने वाले टाइम में 6G के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी जहाँ पे 6G की रोल आउट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. Now, the other thing that you need to know, the evolution of the generations. The G actually stand for generation, right? तो किस तरह से चीज़ें चेंज हुई है. Now, if you look at the path, I mean, from first G onwards, first G was AMPS. उससे 2G में जाने में हमें 10 साल का समय लगा, almost close to 11 years that we took. Now, from 2G to 3G, it took us 7 years. Now, from 3G to 4G, it took us 6 years, and from 4G to 5G, it took us 4 years close. अब इसके बाद जो 5G में जाने की जो ट्रांजिशन है, this will say that it will take almost close to 2 to 3 years, and we'll be achieving it very, very soon. नाउ मैंडेट ऑफ द लैब्स की अगर बात करें, जो लैब्स बनाई गई थी उसके क्या मैंडेट है, क्या क्या उनको बताया गया दैट दे हैव टू डू. ईच लैब हैव 10 फैकल्टी दैट विल हैव 50 स्टूडेंट एथलीट फ्रॉम द 5 स्टार्टअप. तो 10 फैकल्टी फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स एंड दैट विल हैव फ्रॉम डिफरेंट 5 जो स्टार्टअप्स होंगे उनके साथ साथ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, दे विल बी ऑल्सो वर्किंग टू इंश्योर दैट दे आर डेवलपिंग सम सॉफ्टवेयर एंड ईच लैब विल डेवलप एट लीस्ट 10 प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशंस एनुअली. एंड द अदर पार्ट 6G की अराइवल की बात करें 2028 तक ये एक्सपेक्टेड है कि अराइवल होगी फाइनल पूरे इंडिया में, बट टेस्टिंग विल स्टार्ट बिफोर, राइट. 10 टाइम्स 100 टाइम्स फास्टर होंगी कंपेयर टू 5G, 50 टाइम्स हायर देन द डेटा रेट, एंड दिस इज हाउ द इवोल्यूशन इज गोइंग टू बी. यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट फॉर बेटर रिविजन्स. 17 में हुआवे ने 6G स्टार्ट किया और यूएस के कंपनीज 2020 में चाइना हैज द फर्स्ट 6G सैटेलाइट, 21 में कोरिया, 22 में Erections is again doing, 26 it is expected that officially
these part will start, and soft communications and 6G will start with 2028 or 2030 तक ये expectations हैं कि official 6G communication पूरी इंडिया में हो जाएंगे and worldwide. Close to 100 million users 6G database will be there by 2043. So it's a broad roadmap of the 6G rollout. And moving ahead with the other news, this is continuation of the news about the International Mobile Congress which was there in Delhi. Prime Minister has called for self-reliance in the cyber security. Cyber security की अगर बात करें, this has always been a concern for India. Cyber security को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी important think tanks भी बनाए हुए हैं. There have been research that has been doing, but Prime Minister categorically has said that we need to work towards self-reliance in the cyber security. Now, self-reliant cyber security की अगर बात करें, Prime Minister has said that India need to become self-reliant in cyber security, चाहे वो हार्डवेयर की बात हो, सॉफ्टवेयर की बात हो, and the other value chain need to be taken into consideration with digital infrastructure. There is a digital stake which is actually working, right? अगर बात करें प्राइवेसी की, दैट हैज़ टू बी ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी बात की गई है कि राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट? एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट इंडिया शुड एस्टैब्लिश its thought leader with the natural processions from being adopted to the implementations of the technology. Now, what are the other things that you need to know about the cyber security when it is been talked about? इंडिया की साइबर सिक्योरिटी की बात करें, दिस ग्रू फ्रॉम 175 फर्म टू 225 फर्म्स 2020 तक स्टैब्लिश की गई. दीज आर द चेंजेस. रेवेन्यू वाइज भी काफ़ी चेंजेस हैं. एंड इफ यू सी द CAGR, द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, दिस इज क्लोज टू 39% चेंजेस विच इज विजिबल. Key demand is like perimeter security which is there, gateway security which is again there, anti-phishing tools में से यूज़ की जाती है, operational security जो कि end point reductions में होती है, cloud security mostly when the cloud data are saved, वहाँ पे cloud security की ज़रूरत पड़ती है, और cyber security framework जहाँ पे zero trust, continuations and other things are taken into considerations. Now moving ahead with the editorial for the day, that women can make world better, something very important. और अगर बात करें ऐसी एडिटोरियल की जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, एनी आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट, दैट पर्टिकुलर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1, इवन फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3, राइट? एथिक्स में, केस स्टडीज में भी आप इसे यूज कर पाएंगे. UPSC has been frequently asking questions regarding the women empowerment in the mains examination. So let's understand what this editorial is talking about. So first we'll see the future of work in India, the SDG goal, खास करके goal 17 के क्या targets हैं, and the way forward. Now, economic की अगर बात करें, the economic history has shown that the chronology is there. Male is higher as compared to female or compared to women when it comes to the part of economic history. इसकी evidential proof कहाँ से जाती है? इसकी एक्सीडेंशियल प्रूफ आप यहाँ से ले सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में जो दी जाती है, उसमें 90 men हैं. देयर आर 90 men which who has been awarded with this award, and there are only 3 women, right? Only 3 women who has been awarded with the Nobel Prize in economic science. So this provide a data that women need to be more come to the forefront और उनको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है. सबसे पहली जो नोबेल प्राइज दी गई थी वो was Eleanor Ostrom. This was in 2009, where she explained how local communities, and most of them are developing countries, govern themselves. Now the second was given to Esplet Duflo in 2019, where the experimental were there regarding the elevating the global poverty. और रिसेंट में कैलोडिन गोल्डविन को दी गई है, जो कि थर्ड वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज दी गई है फॉर हर वर्क एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस ऑफ अर्निंग बिटवीन द मेन एंड वुमेन ऑन द सेम वर्क दे आर डूइंग. एक ही काम में किस तरह से वेरिएशन हो रही है, जो रेमुनरेशन होती है उसमें, उसके बारे में उन्होंने बताया. नाउ अंडरस्टैंडिंग द अदर डिटेल्स ऑफ द फ्यूचर वर्क एंड इंडिया, राइट? सो ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न को देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई एट द ग्लोबल लेवल, एट द ग्लोबल स्टेज थिंग्स आर चेंजिंग. इंडिया में भी चीज़ें चेंज हुई हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन पार्टिसिपेशन इन द IT सेक्टर. उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ सेक्टर में भी वुमेन के पार्टिसिपेशन है. सो दिस इज इंक्रीजिंग, राइट? लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल जॉब स्केयर इन द रिच कंट्रीज. नाउ गिग इकोनॉमी की अगर बात करें, गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर, दे आर द वन हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द डोमिनेंट एम्प्लॉयमेंट. सो सिर्फ इंडिया में भी देखी गई है, कई ऐसे यूथ है, दे आर प्रेफरिंग गिग वर्किंग, right? They're not fully in the contact with the company, either they're working attachment with 2 or 3 companies.
So India has ranked 132 in the Human Development Index and must invest in the part of caregiving services. तो हमें ज़रूरत है कि हम इस अपने रैंकिंग को और ज़्यादा improve करें. Women domestic and community giving like आशा वर्कर्स, इन लोगों के साथ अभी भी गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग. एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है दे ऑल्सो नीड टू वर्क अप, जहाँ पे आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनके सैलरी में हाइक की जरूरत है. द सैलरी हाइक इज रिक्वायर्ड एंड द टाइमली रीपेमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. Now, SDG के goals you have to align. If you're writing in mains, you need to link up with this SDG goal. SDG के goal 17 कहती है partnership for the goal, right? So sustainable goal has been addressing the environmental, social and economic issues. However, G20 के summits में भी only 20% of the target were there on the track. और ये emphasis दी गई है कि हमें इस target को achieve करनी है by 2030. Which target? The SDG goals target. Now, local system solution can ये cooperate कर सकती है हमें इस चीज़ को develop करने में, and one way for the goal can be done, this can be achieved. So definitely the stakeholders, जितने भी stakeholders, whether it is the government, women, the others organization that is there, they need to be put into forefront to achieve the targets. Now, way out and the way forward and the conclusions, the global male-dominated money-driven system of the institutions must be need an overhaul. जहाँ पे overall का मतलब है कि women की participation हमें बढ़ाने की जरूरत है. Women must be given freedom to promote within the male domination institutions and rather shape better family spirited institutions for the governance. And without fundamental institution reform, अगर ये fundamental changes नहीं की गई, then we'll not able to achieve the concept of Vasudev Kundakam. इसका मतलब है one family, one earth, one future. This can only be done once things are put in place. हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है. एट एवरी स्पेयर women need to given the liberty and place to work, right? तो G20 के जो बैनर्स में ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को एनविसाज किया गया है, उसे सक्सेस करने के लिए हमें ये सारे चेंजेस के साथ ही आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी. Now moving ahead with the answers and discussion. कल के जो सवाल है उसके करेक्ट ऑप्शंस और डिस्कशन. फर्स्ट द करेक्ट ऑप्शन इज ए. मैंने आपसे पूछा था DNA के बारे में, द प्रोटेस्ट बेसिकली उसके बारे में. व्हाट आर द थिंग्स? सो protists are the organism that do not belong to animal, plant and bacterium or the fungal categories. इसके statement 1 correct है, that it is a kingdom from 6 kingdom, that is Eucobacteria, Archbacteria, Fungi, Plantae and Animalia. तो आप चेक कर सकते हैं आपने क्या करेक्ट ऑप्शन मार्क किया. The second question of the day, that is International Parliamentary Union. इसके भी करेक्ट ऑप्शन है E. It is the association of the parliament. It was founded in Paris in 1889 और ये फोस्टर करती है डिप्लोमेसी को. इसकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. इट्स अ वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग कोलैबोरेशंस अमंग ऑल द नेशन. सो डू चेक आउट आपने क्या करेक्ट ऑप्शन मार्क किया. नाउ विल सी विद टुडेज MCQ क्वेश्चंस फॉर द डे. The first question is about the comet and meteors. They are typically the remnant of asteroid and been broken down to the collisions of factors. Comets are the bodies that is poised of dust, ice, volatile compound, orbit and sun. The short comets like Halley comets and orbital have a less than 200 years. So this is the duration. So now what you have to do, you have to participate by writing the questions. आप question 1 या फिर question 2 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप correct option choose करेंगे A, B, C या फिर D, and you can write that in the comment section down below. The second question of the day is about the Mars quakes. This is generally less intense than the earthquake and it was actually launched by NASA in 2018. तो ये स्टडी के बारे में आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, A, B, C और D. क्वेश्चन नंबर के साथ आप अपने ऑप्शंस हमें ज़रूर बताएं whether which is the correct option. We'll discuss the detailed explanation on the next video analysis. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, admissions, programs or admissions, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. And for best wishes to all the aspirants who will be appearing for the 2024, make sure you put your all best effort and we are there to help you out. Thank you so much for watching.